Hello, this is Ashish Tripathi from Mount Data School, Jhansi. Stay safe, stay home, and attend the online classes continuously. Number of the students are missing the online classes. Please watch the video and attend the online classes. Today our chapter is MySQL. MySQL means SQL. SQL is the backend. Backend means it is a database management system that is used to store data, whatever the data you are inputting. For example, you are creating the table of a student in which you are inputting the name, roll number, phone number of thousands of students. That is used by the SQL, structure query language. Either it is a database management part of as there are two things, one is the back end and one is the like C++, Java, Python. These are the front end, because using these we are making the programs. But the data provided by this language, where we store the data will be stored on the back end. And SQL and then DBase, FoxPro, and the previous some MS Access, these all are the backend where we are storing the data. It is a structured query language, a computer language for storing, manipulating, and retrieving data stored in a relational database. SQL is the standard language of relational databases. It is also known as Oracle. It is a part of the. It is also known as the Oracle. SQL is used. Again, I am repeating, SQL is a database management system that is used to store the data in backend. Whatever the data you have given by the front end like Pascal, C++, Java, किसी भी language से दिया हुआ कोई भी data, it is stored in the database management system, and that database management system is known as the SQL, and it is also known as the Oracle. Now, after some steps, I have given a प्रोग्राम हाउ टू मेक टेबल्स इन एसक्यूएल. अभी तो हम लोग केवल आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आई विल टीच यू हाउ टू मेक टेबल, हाउ टू स्टोर द डेटा इन द टेबल, हाउ टू रीड द डेटा इन द टेबल, एंड हाउ टू गिव द कंडीशंस और व्यूज इन द टेबल. सो आई एम गिविंग अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेबल्स. Here, click on MySQL. The MySQL will come. Now, here you type there. It is asking for the password. Enter the password. Password is whatever the password you have given. Give the password. Press enter. If the password is proper, your screen will appear like that. Now you write there use MySQL. जो उसकी पहली command होगी, semicolon, database change. Now we have to create a table. Create table. student. Enter. Then name char 20, then comma, this is the name, the roll number RNO, then press integer, comma, phone number and roll number, then total, press integer integer, integer, comma, percentage, okay, integer, okay, comma, result, then this is then semicolon. टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब पहले से बनी हुई टेबल है. आप स्टूडेंट की जगह कोई और टेबल देते हैं. क्रिएट टेबल student mlzs. This is name, okay, then char name, roll number, total, percentage, result, char
20, this is 20, then semicolon, one row, एक इसका मतलब पूरी टेबल बन गई, one row is affected. Now we are inputting the value. How to input the value into table? We write there insert into student MLZS, enter values braces, पहली बार मैं नेम दिया है वो, तो राइट डाउन देयर आशीष, then roll number 56, then total 670, comma percentage 98, then press the passes, close, column count does not count of the row 1. ठीक है, insert into student MLZS, पहले टेबल का नाम चेक कर लेते हैं, insert into student student MLZS, ठीक है, नेम के अंदर वैल्यू हो गया आशीष, देन रोल नंबर 56, देन परसेंटेज, देन टोटल एंड देन रिजल्ट। द प्रॉब्लम इज़ दैट हम लोगों ने एक मिस्टेक की हुई है, दैट इज़ यहाँ पर वैल्यूज़ में रिजल्ट नहीं दिया हुआ, कॉमा सॉरी पास, दिस इज ओके, वन रो अफेक्टेड, यानी एक वैल्यू इनपुट हो गई। तो देखा गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, वो भी मैंने आपको साथ साथ दी हुई है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यूज देना चाहते हो तो लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STUDENT MLZS सेमीकोलन, आ गया वैल्यूज आपके साथ में। ठीक है, क्लियर इट इज। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते क्विट कर दीजिए, इट विल बी आउट।